Hello friends, we will do the volume of different items, different figures. So the question is, a pen stand made of wood is in cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. Radius of each depression is 0.5 cm, depth is 1.4. Find the volume of wood, entire stand dimension. So dimensions of cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. Radius is 0.5 and the depth is 1.4 cm. Depth is conical, जो इसके shapes हैं. So the volume of entire stand is equal to volume of cuboid 15 multiplied by 10 multiplied by 35 upon 10 minus there are four depressions. So volume of one depression is 1.3 pi r square h. Pi is 1.3 pi r square. R is 0.5. R is 0.5. 5 on 10 multiplied by 5 on 10 multiplied by 1.4 upon 14 upon 10. So it will become 525 minus 7 2 से चले जाएगा 5 से 2 और 2 से ये 4 2 से 4 और 2 से 2. तो यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ से 2 से ये 10 कट जाएंगे 5 आएगा. यहाँ से आया ये 22 अपॉन 15. 525 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.47 इज इक्वल टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. ये इसका क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेसल इज in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. Height of cone is equal to 8 cm and radius r is equal to 5 cm. Filled with water to its brim. When lead shots each which is spare of radius 0.5. Radius of lead shot R2 is equal to 0.5 centimeter. 0.5 centimeter are dropped in the vessel. 1/4 of water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. Volume of conical vessel. Conical vessel is equal to 1/3 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 5 multiplied by 8.
So it will 4400 upon 21 centimeter cube. 1/4 of volume of 1/4 butter is 4 multiply 21 multiply by 1/4 is equal to 1100 upon 1100 upon 21, 1100 upon 21 centimeter cube is the volume of water, because 1/4 of water will comes out from the vessel. So the volume lead shot is equal to 4/3 22 upon 7 multiply by 5 upon 10 5 upon 10 5 upon 10 2 और 2 से 2 2 से 2 2 से 11 is equal to 11 upon 21 centimeter cube. Number of lead shot put in vessel equal to 11 multiply by 21 upon 11 is equal to 100. डिवाइड करेंगे 1/4 ऑफ वाटर उतना ही होगा जितना कि लेड शूट का जितना कि लेड शूट जितने भी डाले हुए हैं उसका वॉल्यूम. ये तो एक लेड शूट का इतना है, उसको हम डिवाइड कर देंगे. टोटल 1/4 वाटर को एक लेड शूट से डिवाइड करेंगे तो लेड शॉट की संख्या हमारे पास आ जाएगी कितनी है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter. Cylinder height of cylinder is equal to 220 centimeter, and base diameter is equal to 24 centimeter, R is equal to 12 centimeter, which is surmounted by another cylinder. This height is H1 and this is R1. Height of second cylinder is equal to 60, another cylinder is 60 centimeter. This is H2, and the radius R is equal to 8 centimeter, R2. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Then the volume of the iron pole is equal to pi r square h, pi y बटे 7 r स्क्वायर, पहले का r1 स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई 220 प्लस 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60. uh, 22 अपॉन 7 नहीं होगा यहाँ पर होगा
3.14 ये गिवन है, ये 3.14 है। ये इसमें क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 3.14 यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको 3.14 लिखेंगे। 3.14 हम कॉमन लेके हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीपल 220 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 60। थ्री पॉइंट 14 इंटू ये आएगा मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई weight of pole is 11, 15, 32.8 मल्टीप्लाई बाई 8/1000। 8 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया, 8 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आएगा 892.2624 is equal to 892.26 kilogram. This will be the weight of the pole. So this is the formula: volume of the iron pole, volume of the first cylinder and volume of the second cylinder। 3.14 कॉमन प्लस यहाँ पर this will be in same bracket, so the when we multiply it, it will centimeter cube। Weight of the pole is 8 gram is per centimeter cube, so the total weight of the 892.26। Thank you for watching.